जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। बच्चों, hope you all are very fine. So today we will take chapter number 25 of our English grammar textbook, that is conjunctions. Conjunctions, as all of us knows that conjunction are the joining words. ठीक है, these are the words that connects word, phrases और sentences. वो words जो दो sentences को join करते हैं that are called conjunctions. उनको हम joining words बोलते हैं. Like for an example, I'll have a cup of hot chocolate and a sandwich. तो दो चीज़ों को जो कनेक्ट किया, दो वर्ड्स को चॉकलेट और सैंडविच के बीच में एंड लगा के मैंने कनेक्ट किया, दैट इज अ कंजंक्शन. ठीक है. दे वर लेट बिकॉज देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड. दे वर लेट एक अलग सेंटेंस है, देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड एक डिफरेंट सेंटेंस है. इफ वी वांट टू कनेक्ट इट तो वील यूज कंजंक्शन एज बिकॉज. दे वर लेट बिकॉज देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड. ठीक है. कंजंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स इन आवर टेक्स्ट बुक. व्हाट वी आर गोइंग टू रीड is two types of conjunctions. One is coordinating conjunctions and other is subordinating conjunction. ठीक है. Coordinating conjunctions में we'll read four types like and, but, or so. So I'll explain everything and pay attention everybody. And जो है that is used to combine two things that is of equal and similar weightage. Like if I am talking about music then dance, acting then music. ठीक है. तो उनको जो दो सेंटेंसेस, जैसे अभी एग्जांपल में मैंने बोला था हॉट चॉकलेट एंड अ सैंडविच, बोथ आर ईटरी प्रोडक्ट्स. ना दोनों खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें. सो दैट इज एंड हमने यूज़ किया जिनकी इक्वल वेटेज हो. लाइक फॉर एग्जांपल आई प्ले द पियानो एंड माई सिस्टर प्लेज द गिटार. तो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, म्यूजिक से रिलेटेड हो गए, तो एंड लगाया हमने बीच में. बट जो है, बट इज लेकिन इन हिंदी, एंड इज और इन हिंदी. तो बट का हम क्या यूज करते हैं? इट शोज कंट्रास्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जूही केम टू द पार्टी बट शी लेफ्ट अर्ली. ये उसके कंट्रास्ट के सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे वो पार्टी में आई थी लेकिन वो जल्दी चली गई. ठीक है. तो बट इज यूज्ड. और जो है, और इज या तो चॉइस होती है ना, और इज एन ऑप्शन टू शो अ चॉइस और एन अल्टरनेटिव, या उसका कोई अल्टरनेटिव हमें शो करे. यू कुड वेयर जीन्स और ट्राउजर्स. ठीक है. तो सो क्या होता है? इसलिए सो इज लाइक कि जो किसी चीज से रिजल्ट आता है, किसी और चीज के होने की वजह से जो रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सो. वी वर गेटिंग बोर्ड, हम बोर हो रहे थे, सो वी प्लेड अ गेम. तो हमने गेम खेलना शुरू किया. ठीक है. गेम खेला. Like moving on to A exercise. First one is already been done. From second we'll start. We are given with two options in brackets. We need to find the correct conjunction to fill the sentence. Okay. His clothes were clean, but his shoes were muddy. कुसुम should leave now or she will miss the bus. कुसुम को अभी चले जाना चाहिए, नहीं तो वो बस मिस कर देगी. The children performed a wonderful play and the audience clapped. Nick had a fall during the match, but he did not get hurt. Shall I put this on the table or the carpet? जो ये या है हमने उसको माना. Shall I put this on the table and the carpet is not possible कि कारपेट पे भी रख दूं और टेबल पे भी रख दूं. तो it is or the carpet. There is a choice between the two. ठीक है. पुनीत was not feeling well. उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, so he went to the doctor. ठीक है. और नहीं आ सकता ना, या तो इसलिए डॉक्टर पे जाना इज नथिंग, इसलिए वो गया था. सो तो ही वेंट टू द डॉक्टर. सो इज इन हिंदी इसलिए या तो. जेनेट डिड नॉट नो द आंसर सो शी वॉज क्वाइट. जेनेट को आंसर नहीं आता था इसलिए वो चुपचाप बैठी थी. ठीक है. दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फर्स्ट फोर आर गिवन ऑन our textual page. We'll read that table. When is used to, when से जैसे पता चलता है ना, जब. When in Hindi is जब. It is used to indicate the time when something happened or will happen. जब कुछ हुआ था या होने वाला है, वहाँ पे हम when यूज करते हैं. Like Simi was having lunch when the telephone rang. जब फोन बजा था तब वो खाना खा रही थी. If किस लिए यूज होता है? कि अगर ऐसा होता तो. If is अगर. Used to show that something will happen. अगर कुछ चेंज होता है, इफ समथिंग एल्स, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, लाइक दैट. उसमें हम इफ यूज करते हैं.
We'll watch the show if we get the tickets. हम शो देखेंगे अगर हमें टिकट्स मिल जाएंगे. बिकॉज कैसा होता है, बिकॉज इंडिकेट्स अ रीजन वाई समथिंग हैपेंड और वे, बिकॉज यानी क्योंकि, क्यों जो कुछ हुआ उसका हमें आंसर या रीजन पता चलता है, वहां पे हम बिकॉज यूज करते हैं. लाइक ही वेंट टू द लाइब्रेरी बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी. वो लाइब्रेरी गया क्योंकि वो पढ़ना चाहता था. Although is जबकि in Hindi, it is like it used to show that in spite of something there was a result that was different and unexpected. ऐसा होने के बावजूद जो एक अलग रिजल्ट आए, that is called although. We didn't win the match although we played well. हमने मैच नहीं जीता लेकिन हमने, जबकि हमने अच्छा खेला था. Okay, moving on to more conjunctions, subordinating conjunctions. Until is also used to indicate time. जब तक ऐसा नहीं था तब तक हम खेल रहे थे. We played outside until it was dark. Since is used. Since again shows time or cause. It's like I was waiting for you since 3 hours. 3 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. And Renu was absent since she was not feeling well. वो absent थी जब से वो अच्छा फील नहीं कर रही थी. ठीक है. For in हिंदी के लिए I gave him some water for he was thirsty. वो प्यासा था इसके लिए मैंने उसको कुछ पानी दिया. It indicate proof or explanation of something. इसके लिए हम for use करते हैं. Before is इससे पहले या पहले. Before in हिंदी is इससे पहले या पहले. It used to indicate a time that is earlier to what is being mentioned. Like the meal was ready before the guest arrived. लोगों गेस्ट के आने से पहले जो खाना था वो तैयार था. Unless is used to refer a necessary condition for a result. You will not succeed. जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे you will not succeed. Unless in Hindi is जब तक. While used to indicate that something happened at the same time as something else. कि एक ही टाइम पे कुछ और भी हो रहा है. जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बहन खेल रही थी. I was studying and while my sister was playing. Like this. Okay. जबकि. So we need to underline the conjunctions in the following sentences. Be exercise. He learned to, very easy to find. He learned to speak Tamil while he lived in Chennai. So every one of you can easily guess while is the conjunction. ठीक है ना? I'll call you. Before is the conjunction. We need to underline before. You will see some beautiful fish if you visit the aquarium. If is conjunction, we need to underline if. Then in fifth one after. Then in sixth because. सेवन्थ, ऑल्दो हर इंटरव्यू वेंट वेल शी वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब. उसका इंटरव्यू जबकि इतना अच्छा हुआ था फिर भी वो जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं. तो ऑल्दो इज द कंजंक्शन. प्लेसमेंट अलग है कंजंक्शन की, कहीं पे स्टार्टिंग में हुआ हुआ है कहीं पे मिडल में यूज हुआ हुआ है. ओके. सिंस यू बॉट इट यू हैव टू यूज इट. अब तुमने इसको खरीदा है तो तुम्हें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. सिंस यू बॉट इट, तो सिंस इज द कंजंक्शन. There will be a big problem unless we do something about it. Unless is the conjunction. Next last में before is the conjunction. Now in other exercises we are given with 2 conjunctions. We need to write the appropriate one for the particular sentence. Okay. We were disappointed because the class picnic was postponed. It happened in our real life also. No? On 8th was our picnic, that was also cancelled. Komal likes to eat green vegetables because they are good for health. Plants grow well in our garden, although the soil is not very fertile. Although the wound on her leg has healed, Tina still feels a bit of pain. The play was a great success because the actors performed well. Although we were late, we did not miss the train. The guests did not eat much, although the dishes were tasty. Guests ने ज़्यादा खाना नहीं खाया जबकि dishes जो थी tasty बनी थी. That was very easy to find from because or although, right? Now moving on to D. हमें यहाँ पे when और while का proper use करके दिखाना है. Okay, the family was getting ready for bed when they heard a strange noise from the attic. Mr. Kumar called us while he was walking down the street. The spectators watched in admiration when the clown juggled 6 balls in the air. When the train arrived, the passengers scrambled to board it. I ironed my uniform while my sister packed her bag. Mother finished her work when we were in school. That almost every mother does. My parents waited near the office while I collected my certificate. Okay. Now in E exercise, we are supposed to circle the correct conjunction. Okay, so we need to circle it. I have underlined it. You need to circle it. My uncle practices singing day and night because he is participating in a singing competition soon. You will not make any friends if you are not polite. ये रियलिटी भी होती है. अगर तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी एबल टू मेक फ्रेंड्स. ओके.
Milo has grown taller since I saw him last. I felt very sad when the holidays came to an end. I'll wait for him till he returns. Okay. Next is, when I go to Udaipur, I will surely visit the city palace. She checked to see if she had taken everything before she left. If and before is the correct conjunction to use. You should eat the ice cream before it melts. She is very active even though she is old. Okay. Now we need to add conjunctions given in bracket and frame sentence again. Okay. Pa- uh, Parag went to the market and bought fruits and vegetable. He को हम कट कर देंगे, उसकी जगह and लिखेंगे and full stop will be removed also. Parag went to the market and bought fruits and vegetables. Now we'll place as soon as in the starting of the sentence, like as soon as Sukanya saw the child, comma, she smiled at him. Fourth one, our old fridge did not work, therefore father decided to buy a new one. Comma लगा के therefore लिख देंगे. Since the bus was late, again conjunction at the starting. Since the bus was late, comma, I missed the connecting flight. Sixth may because we need to use, so we'll add it like you can keep your torch with you because I have bought my own. And whenever we are connecting two sentences, we need to remove the full stop. Okay. Uh, there is a leak somewhere, so the tank is empty. Full stop remove हो जाएगा first sentence. ये ध्यान से लिखनी है exercise. The teacher is very kind, but she is firm with her students. The teacher is very kind, but she is firm with her students. I have not written complete sentences, but you need to write complete sentences in your textbooks. Hope you all have understood the same. Whatever doubts will be clear in online classes. Thank you. Have a nice day.